Good morning, students. Today we will see unit number 2, cash flow, interest, and equivalence. First of all, what is cash flow? So, whatever the transaction we have done in our organizations, so those transactions are recorded on particular software. Yes, so that is considered as a cash flow. Cash flow means outgoing of cash from organization and incoming cash from organization. So cash inflow and cash outflow are maintained in one software. Yes, so those records are considered as a cash flow. So here a simple definition is given to you. What is cash? Cash means whatever the cash we have on hand, that is cash. When cash is invested in some non-cash asset, for example material, equipment, gold, shares, land, or any other thing, yes, so then that use of asset or increase the price of asset generates wealth. Means we are investing cash in something or some goods. Yes, so after some time it creates our wealth and its value is increased day by day. So this is the simple definition of cash. Okay, so here there are two types of cash I have already mentioned. First one is cash inflow and second one is cash outflow. So first, what is cash inflows? So cash inflows means what? Whatever the cash are coming in our organization, that is cash inflows. So cash inflows has two sub classification. First one is incurring cash inflow and non-incurring cash inflow. Means after selling some particular goods we are getting income in every month. Yes, so that is incoming or a recurring cash inflow. Second one is non-recurring cash inflow. Means whenever if we are selling something or we are selling our asset, yes, so after that whatever the cash is generated after selling that asset, okay, that is only for one time. So that is non-recurring cash inflows. Here one example is given to you: salvage value of machine, insurance settlement, and business separation. Yes, so salvage value of machine means selling of that particular machine we are getting some cash. Yes, so that is non-recurring cash inflows. And other examples are insurance settlement, business separation. Okay, now we come to the second point, cash outflows. So cash outflows means what? So it is a cash payment, reduce the cash on hand. Means our cash is going outside. So that is cash outflows. It has also two types, recurring cash outflow and non-recurring cash outflow. Means a purchase of raw material, salary of employee, electricity bill. So these kind of expenses are generated every month. Yes, so that is a recurring cash outflow. Recurring means reoccur, जो बार बार अकर हो रहा है at the end of every month or at the end of regular interval. So that is recurring cash outflow. Now second point, non-recurring cash outflow. So purchase of asset, machinery, equipment, vehicle, infrastructure or land. So these are the examples of cash recurring outflow. एक ही बार हमने कुछ चीज़ है वो एक बार जो परचेज करते हैं और उसके बदले में हम कुछ पैसे उनको देते हैं. मीन्स आवर कैश इज गोइंग आउटसाइड फ्रॉम आवर ऑर्गेनाइजेशन. सो दैट इज नॉन रिकरिंग कैश फ्लो, जो बार बार ऐसे एक्सपेंसेस जो बार बार अकर नहीं हो रहे हैं. यस, so that is non-recurring cash outflows.
Yes, so here we have seen two types of cash. One is cash inflows and second one is cash outflows. Okay, now what is cash flow? Cash flow means what? We are maintaining one account. In that account, we shows how many incomes are generated, that is cash inflows, and how many expenses are we have to done uh, at a regular interval or one time. Yes, so we shows what are our income and what are our expenses. So that is done with the help of cash flow. Yes, cash flow means we are maintaining one account. That account name is cash flow account. So through that cash flow account, we shows at the end of year, after deducting expenses from our income, what is our profit. So that is shown with the help of cash flow account. Okay, so here one table is given to you. This is cash flow table or this is cash flow account. In this structure, we have to maintain our income as well as our expenses. Yes, so see here our first column is particulars, means we have to write down the notes for which purpose, whether it is income, whether this is expenses, which kind of discounts we have to given, or how many discount is deducted from that particular income. So that kind of notes we have to write down in a particulars column. Yes, second column is T0, then T1, T2, T3 up to Tn. Yes, so T0, T1, T2, T3, what is this? These are the years, time. Yes, for 0 years, 1 year, 2 year, 3 year up to n years. Yes, so these columns shows how many years we have to maintain this cash flow. Okay, now see first row, non-recurring initial investment. Yes, so whenever we are establishing one business, so at that time we have to put cash. Yes, and through that cash we are starting our business, means we are investing our cash in that business. Yes, so here down arrow shows these are the expense and up arrow shows that is our income. Yes, what is this? Down arrow shows this is our expense and up arrow that shows it is our income. Yes, so see first row, non-recurring means one time investment, so that is our initial investment. Now see the in a first row last column, terminal revenue, मतलब लास्ट टाइम अगर हमारा बिजनेस है तो उसमें लास्ट टाइम क्या हमारे एक्सपेंस थे, क्या हमारा क्लोजिंग बैलेंस था. सो दैट क्लोजिंग बैलेंस बिकम्स आवर ओपनिंग बैलेंस, सो दैट इज़ टर्मिनल रेवेन्यू. और लास्ट टाइम हमारी इनकम क्या थी. यस, सो जो इनकम हुई है लास्ट टाइम आफ्टर डिडक्शन ऑफ ऑल एक्सपेंसेस. यस, सो व्हाट इज़ आवर प्रॉफिट, नॉट इनकम. So that profit is written as a terminal revenue. Yes, so it shows our income. So we have write down up arrow. Now come to the next line, that is recurring. Recurring matlab recurring may be recurring of cash inflows and recurring of cash outflows. Yes, सो फर्स्ट वी विल राइट डाउन कैश इनफ्लोस, मतलब हमारे बिजनेस में कौन सी कैश आ रही है. ठीक है, मेरा मैन्युफैक्चरिंग है, मेरा फैब्रिक का मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है. ठीक है, तो मैं फैब्रिक्स है, मैं
1000 मीटर्स मैंने सेल कर दिया फॉर एग्जांपल, तो जो सेलिंग करने के बाद मुझे जो इनकम जनरेट हो रही है, ठीक है, तो मैं लिखूँगी कि सब आफ्टर एवरी मंथ आई माई इनकम इज जनरेटेड, यस, सो सेलिंग ऑफ दैट फैब्रिक आई एम गेनिंग फ्रॉम दैट फैब्रिक, सो वो मेरी इनकम हुई जो हर मंथ मुझ जनरेट होती है, ठीक है, सो दैट इज सेल. So we have write down the cell, so that is up arrow, that is our income. Then depreciation, so here depreciation है तो वो भी है, वो अप हो रहा है, ठीक है, तो वो भी हमें एज ए इनकम हम रीअकर हो रहा है. रीअकर मतलब कोई भी चीज़ है, ठीक है, तो उस चीज़ का डेप्रिशिएशन लगता है, ठीक है, तो वो है, तो वो भी हम अप हो रहा है. एक्सपेंस जो हमारी इनकम है वो हमारी मतलब एक्सपेंस हो रहे हैं. टैक्स है वो भी हमारा डिडक्ट होता है, तो इसीलिए हमने डाउन एरो में हमने रिप्रेजेंट किया है. एफडी इंटरेस्ट, फिक्स डिपॉजिट हमने जो करवाई उसका इंटरेस्ट, सपोज 10,000 रुपीज़ है, उसकी मैंने फिक्स डिपॉजिट करवाई है, तो उसका इंटरेस्ट जनरेट हो रहा है, सो दैट इज़ माई इनकम, ठीक है. तो उसको हम अप एरो से हम दिखाएंगे. लोन इंस्टॉलमेंट, हमने लोन ली है बैंक में से, ठीक है, और उसके इंस्टॉलमेंट हमें पे कर रहे हैं, मतलब हमारी इनकम में से उतने पैसे हम बैंक को पे कर रहे हैं, सो दैट इज़ आवर एक्सपेंस, ठीक है. तो लोन इंस्टॉलमेंट दैट इज़ कंसिडर्ड आवर एक्सपेंस, सो इट शोज विथ डाउन एरो, ओके. सो आफ्टर दैट वी आर मेकिंग टोटल, यस, so what are our incomes, what are our expenses? So from income we are deducting expenses and then we are making total and then we are applying a discount. So discount, then after deducting discount from total we are getting net discounted cash flow. मतलब उसके बाद हमारे कितने पैसे बचते हैं, ठीक है, प्रॉफिट होता है कि लॉस होता है, यस, सो दैट इज रिटन इन नेट डिस्काउंटेड कैश फ्लो रो, ठीक है. सो एट द एंड ऑफ T0, एट द एंड ऑफ T1, T2 एंड T3, ठीक है. तो हर एक साल के बाद फर्स्ट ईयर में कितना हमें प्रॉफिट मिला, सेकंड ईयर में कितना मिला, थर्ड में कितना मिला, सो दैट इज रिटन इन ए नेट फ्लो कैश फ्लो रो, यस. ओके, नाउ नेक्स्ट इज, यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल देखेंगे. सो व्हाट इज़ द एग्जाम्पल? सो एग्जाम्पल ऐसा है कि डेवलप अ कैश फ्लो डायग्राम फॉर 5 year लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट प्रपोज्ड बाय फर्म वेयर इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपीज़ INR मीन्स इंडियन रुपीज़ 10,000 कैन बी मेड that will produce uniform annual revenue of INR 5,310 for 5 years and then have a market value of Indian rupees 2,000 at the end of year 5. Annual expenses will be Indian rupees 3,000 at the end of each year for operating and maintaining the project. Draw cash flow diagram for the 5 year life of a project. Yes, so here we are drawing a cash flow diagram on left hand side. So here we are making mainly 2 columns, years and amount in rupees. Yes, so here and on right hand side we are making how income, how can we shows income and expenses through different arrows. Yes, so here plus arrow shows, plus means up arrow and down means expenses. Down arrow shows expenses, so that is indicated by minus sign, and up arrow that is our income, so that is indicated with plus sign. Yes, now what we have to do? So here we have to draw cash flow diagram. Yes,
So cash flow diagram we have to make we have to draw cash flow diagrams for 5 years. हमें 5 साल के लिए कैश फ्लो डायग्राम बनाना है, ठीक है. सो स्टार्टिंग फ्रॉम 1 2 3 4 एंड 5 हमें 5 साल का बनाना है. अब क्या बोला है उसमें फर्स्ट लाइन रीड करो कि इसमें ऐसा बोला है कि इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹10,000 कैन बी मेड दैट विल प्रोड्यूस यूनिफॉर्म एनुअल रेवेन्यू ऑफ 5,310 फॉर 5 years. मतलब हम जब ये डायग्राम बना रहे हैं एक प्रोजेक्ट के लिए, तो उसमें इनिशियल जो हमारा इन्वेस्टमेंट है वो 10,000 रुपीज़ है, ठीक है. तो हमें 10,000 रुपीज़ हमारी जेब से खर्च करने पड़ते हैं, ठीक है. तो इसीलिए 10,000 रुपीज़ को देखो डाउन एरो से रिप्रेजेंट किया है टेबल में, लेफ्ट हैंड साइड जो टेबल है उसमें, ठीक है. सो वो फर्स्ट ईयर हमने 10,000 रुपीज़ इन्वेस्ट किए. फिर क्या बोला है दैट कैन बी मेड दैट विल प्रोड्यूस यूनिफॉर्म एनुअल रेवेन्यू ऑफ 5,310 फॉर 5 years. यस. अब ऐसा बोला है कि एट द एंड ऑफ एवरी ईयर्स, मतलब जो 5 years है तब हमें क्या मिलता है, रेवेन्यू मिलता है. रेवेन्यू मतलब इनकम, ठीक है. हमें इनकम जनरेट होती है 5 साल के लिए. कितनी इनकम जनरेट होती है, ठीक है, 5,310 रुपये जनरेट होती है. तो देखो हमने जो हमारा टेबल है तो उसमें हमने दिखा है 5,310 फॉर सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, ठीक है. फिर क्या किया है हमने, फिर हमने यहाँ पे दिखाया है कि यहाँ पे एंड देन हैव अ मार्केट वैल्यू ऑफ ₹2,000 एट द एंड ऑफ ईयर 5. मतलब 5वां साल जब चल रहा है तब इस प्रोजेक्ट की, मतलब जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं उसकी मार्केट वैल्यू हमें जब हम सेल करेंगे तो हमें उसमें से 2,000 मिलते हैं. जब हम सेल करेंगे तो 2,000 मिलते हैं, दैट इज़ आवर साल्वेज वैल्यू, ठीक है. सो हमने यहाँ पे 2,000 लिखे हैं, देखो एट द एंड ऑफ 5th year 2,000, ठीक है. थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम में लिखा है 2,000. सो दैट इज़ आवर इनकम. एनुअल एक्सपेंसेस विल बी 3,000 रुपीज़ एट द एंड ऑफ ईच ईयर. अब एक्सपेंसेस है तो एक्सपेंसेस को हमने okay, so we have seen 3,000 they are expenses throughout 5 years and 2,000 rupees that is revenue. So that is display on left hand side table. Now see on right hand side we have written 5 years from 0 to 5. Yes, so first of all we have to write down 0 1 2 3 4 and 5. Whatever the incomes, that incomes is written on upside. So 5,310 rupees, that is our income throughout from 1st to 5 years. So that is written on upside. And 3,000, that is expense, so that is written on a downside and it represents with down arrow. 2,000, that is our revenue. So that is displayed on upside. Yes, so that is our incomes. So like these we have to draw cash flow diagram. Understood students? Okay, तो ओके, सो यहाँ पे ये सेशन हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं. थैंक यू.